वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, बहुत अच्छा हुआ। और अब हम अपने चीफ गेस्ट अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब से स्टार्ट करने के लिए और हमारे मुख्य वक्ता का को स्वागत करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप सिन्हा जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके स्वागत के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एक ज्ञान मिलता है, बहुत दुर्लभ ज्ञान मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिलीप सिन्हा जी से आग्रह करता हूँ। हाँ, तो दिलीप जी अब आप शुरू करें। चंद्रेश्वर खान साहब भी आ गए। सबसे पहले अखौरी सर को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, आप प्रणाम सर। चंद्रशेखर खान सर को भी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। शुरू किया जाए सर। सर, so I really feel privileged to address this august audience, though the topic which has been given to me, that is very difficult, I believe, in the current circumstances. There is a lot of debate going on related to climate change and global warming. So whether I will be able to do justice with it or not, because people are talking about climate justice nowadays. Whether I will be able to do justice with this topic or not, that is yet to be seen. In fact, I have made a small PowerPoint presentation, so that I will be sharing. ठीक है ना सर? उसके थ्रू मैं बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, उसमें आ जाएगा। हाँ, मैं उसको प्रेजेंटेशन को ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जी जी। Let me share it. It will take a few seconds. Okay. लग रहा है कि वो सारे स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स नोट करेंगे और सब लोग अपना अपना प्रश्न पूछेंगे। दिलीप जी और भी बहुत सारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, विद्यानाथ झा जी, उमेश चंद्र जोशी, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग सबको ही आपको हेल्प करेंगे, तो आप अपना पॉइंट पूछेंगे। ये शेयर होने प्रॉब्लम क्यों कर रहा है विंडो?
नहीं, तुरंत ज्वाइन हो जाता है। हाँ हो जाता है सर, लेकिन ये पता नहीं अभी क्या थोड़ा सा इशू आ रहा है क्या। एक मिनट, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ। ओके, और अभी मैं इसे, लेट मी शेयर इट, विंडोज। आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया आया। आ गया सर? ग्लोबल आ गया, बहुत बढ़िया आया। ठीक है, द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बोथ आर इंटरकनेक्टेड because global warming is causing climate change. What is global warming? That is what we have to understand first. Afterwards, we will be able to connect it with the climate change phenomenon. Okay. Is audio quality okay? ओके, या Okay, sir. And let me adjust the presentation. So, can you आ see गया the दूसरा। slide? Yeah. ओके, So, global warming is an atmospheric phenomenon. It is not a geological phenomenon. So, whatever we see above the Earth's surface, there are layers of atmosphere. So, we know that there are three distinct layers. I mean, troposphere, stratosphere, and mesosphere, right? So, there is one ozone layer also. Where is it present? This ozone layer? The ozone layer is at the boundary of stratosphere, about 50 kilometers above our head. I mean, you consider the distance between Delhi and Gurgaon, एक्सक्यूज मी or सर, from उसको फुल Patna स्क्रीन to कर दीजिए। Jahanabad. Okay, when you go up, then you get ozone layer. So, what is the function of ozone layer? We all know it has been protecting us from harmful ultraviolet rays. So, these rays are extremely harmful for all organisms present on the earth. So biodiversity is also affected by it. Okay, so I can show you in the distance terms in kilometer. See, the segregation is there. Above the Earth's surface, you can see troposphere is the region where actually this precipitation occurs or the hydrological cycle operates. But due to global warming, there is hydrological cycle is now getting converted into hydro-illogical cycle. I don't say this, but the scientists are saying it. And due to that, the precipitation, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं. I request other audience members to mute their mics. Okay. Now I think it's okay. Am I audible? Is it clear? यस, एब्सोल्युटली Yes, sir. क्लियर। Okay, sir. So, I mean, this is what a trans section of the atmosphere. Below, you can see Earth in black, and then different layers of the atmosphere, starting from troposphere, then tropopause, where it is where this is the meeting point of troposphere and stratosphere, and whatever precipitation or hydrological cycle. I mean, like condensation, evapotranspiration, condensation, then precipitation. These things are occurring within troposphere and stratosphere. In a stratosphere, there is ozone layer which is at the boundary of stratosphere and mesosphere. It protects us from harmful ultraviolet rays, right? So this is our system from aerial view. So we are coming to the ground, see what is happening. So entire ecosystem is made of biotic and abiotic components. Biotic components, all the living organisms are there, which is having life, unicellular to multicellular. Okay, and abiotic component, that is non-living component of the planet. Non-living component does not depend on the living one or biotic, but biotic component relies on abiotic component for its sustenance. Without abiotic component, there will not be life on the planet.
Earth, because we draw nutrients from the abiotic component, and our bodies are made of different nutrients. You all know the major, cons, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and all that. Okay, so see, we have to understand the Earth system, how old our Earth is. It was formed, if we believe Big Bang theory or quark theory, then about 4.6 billion years ago, the Earth was created. Initially, it was like a fireball that we all know. Was it like that or not? Yeah, then it started cooling off. See, it took around 1.6 billion years to cool off. Earlier, the Earth environment was highly anaerobic. Later on, it got converted into aerobic, and whenever we see, whenever we try to identify that okay, whether there is life on any planet in the solar system or not, what do we do? First, we try to find out whether there is water or not, or oxygen or not. So water is essential for life, or oxygen is essential. Without oxygen, even water cannot form. Okay, suppose there is ice flake on any planet, then we can say convincingly that okay, there is possibility of existence of life on that planet. But till now, we have no planet B. This is the only planet we are having on which life exists. Okay, so it is our home of around 8 billion people. Okay, who are on the planet Earth. Okay, and surprisingly, on each continent, there are about 2 billion people. So, this kind of symmetry we are having. Moreover, one thing is there about life forms. There are so many plants and animals. They are all different types of life forms. They are born, then they lead life for a certain span of time, and afterwards they die out. Okay, so life and death, that is part of life. That is a continuous cycle. One species is coming, another species is getting eliminated. Also, extinction is also taking place. So life started on Earth about 3 billion years ago, right? And then multicellular life started about 6 million years, 10 to the power 6, and billion is 10 to the power 9. So plants on land, they originated about 400 million years ago, particularly blue-green alga, BGA first. Actually, that was the unicellular or multicellular plant, which originated on Earth. Then ferns started living about 200 to 70 million years ago. Lastly, human beings came just about 2 million years ago. On the geological time scale, okay, in the next slide, it will be more evident. You can see, you might have seen a number of times this slide also. So, but this is pretty informative on the geological time scale. See how far we have reached. About 4.6 billion years ago, the Earth was created. So it is all about life, global warming, climate change. We need to understand the biodiversity, the impact of global warming on the biodiversity, and why are we worried. In fact, why the scientific community is worried about this particular phenomenon, how to actually control it, or how to reduce the bad impacts of global warming. This is very, very important, and we are trying to find out the solutions for it. So I think this geological time scale is self-explanatory. Lastly, about 2 million years ago, human being came on Earth. And the villain of this entire story is this human being. We are creating pollution, we are causing pollution, we are responsible for global warming. We are emitting carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. Due to that, global warming is taking place. Okay. So the problem is, we are not managing our resources properly. Climate change, okay, in English, this word is there, but in Hindi, the word is very meaningful. इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन.
जल और वायु की क्वालिटी हम लोग खराब कर रहे हैं। जो सबसे लास्ट में आया है वही पृथ्वी पे सबका जीना हराम करके रखा है। इस कहानी का जो विलेन है ना, गब्बर सिंह इज दिस ह्यूमन बीइंग। जैसे गॉड फादर में थे ना रॉबर्ट डिनेरो, तो इस तरीके से यही है ये भी। हम लोग वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग विच इज इवेंचुअली लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे ऐसे तो कहते होंगे कि ठीक है, डायनासोर्स आल्सो एग्जिस्टेड इन जुरासिक पीरियड, दे रीच द पीक starting from Triassic period, and then in Cretaceous period they got eliminated from the ecosystem. लेकिन वो तो है, वो तो साइकिल है। The organisms will come and go, new organisms will come up. चार्ल्स डार्विन की भी थ्योरी है वो, चार्ल्स डार्विन के है ना, origin of a species, speciation, theory of speciation. One species eliminated, another one is, you know, another one originates. So cyclic hai, but due to climate change what is happening, the productivity of the entire ecosystem that is decreasing, and the competition amongst the different life forms, that is also increasing manifold. Due to that there is competition for natural resources. If we do not actually do sustainable development, it will have larger impact in the long run. That's why we all are worried. So now well, I have been into teaching and training of disaster management and climate change for the past more than 20 years. I have worked mostly with the United Nations and government organizations. Currently I am working as an independent consultant with Institution of Civil Engineers, Gurugram. I am also providing technical support to them. I have got some projects of Government of India on which I am working. Okay, we have to submit technical proposal, financial proposal. So this is the right time to join disaster management and this climate change field, I tell you. When I had started my career about long back, 20, 25 years ago, at that time even Disaster Management Act was not passed. So, and we were just clueless in which direction we were moving. Actually, we were not aware about that. Somehow we were trying to strike a balance, with the requirement at the ground level and the programs and policies of the government. And it was very difficult initially, but now, there is plenty of opportunity in the field of disaster management and climate change. Anybody can join it, and there are rewarding careers waiting for them. There are UN agencies, international organizations, institute. Even now, UGC has also made it mandatory to open center, the Department of Disaster Management in all universities, and there would be JRF-NET exam for disaster management as well. So one can become professor also. So you can understand. Shivendu Verma has raised his hand. You want to ask something? In between, okay. No problem. Okay, Please. if you want to ask question, you have raised your hand. Oh, please. What's your question? What is your question, Shivendu Verma? What is your question? ये सूर्यांश वर्मा का क्वेश्चन है। हाँ, सूर्यांश वर्मा, माय सन। ओके, बोलिए सर। सबको नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलिए। Sir, I want first to introduce myself. My name is Suryansh Verma, class 6. Okay. And according to my book, there are 5 layers of atmosphere, and our Dileep sir has told us that there are 3 layers of atmosphere. Not 3. There is ionosphere also. Okay. So I am taking into account only up to troposphere, stratosphere, and mesosphere. There is ionosphere, and above that there is one more layer. Okay. But we are concerned regarding global warming and climate change. We are concerned up to mesosphere only. That's why in the cross section I was showing just 3 different distinct layers. Suryansh, as a guardian, I am guiding you. Such petty questions are not to be asked. You first listen the whole story from Dileep sir, then you jot down the questions, at the end you ask. Okay? Thank you. This is a petty question. This is not a big question. Thank you. Okay, but further divided. They have other zones have also been identified.
But Okay, so I'm proceeding further. Nagesh Jaji, he is sixth class student and he has asked question that is he should be motivated. He should be motivated Yes, also. yes. Uh, Yes, uh, yes, yes. very good, nice question. Shivenduji, Good. encourage him. He has asked question and he got good solution also. Okay. He may ask question also in between. So, Sir, okay. Continue, sir, sir. Yeah, yeah. Anybody can ask हाँ any बोलिए question, you बोलिए know. हाँ sir, बोलिए बोलिए atmosphere. हाँ There are two more layers, thermosphere and exosphere. I know that exosphere is outer space, but thermosphere is also one layer. Hello. Yes, I हाँ told you, there are other layers also. But for climate change aspect, we are concerned basically with these three layers of the atmosphere, mostly with troposphere and stratosphere, mesosphere only. Okay. Sorry, troposphere and stratosphere up to ozone layer, not beyond that, like ionosphere, thermosphere, and so other layers are there. So tell me, what do you want to say? Okay. Okay, so the so concept is clear that according to what, so my concept is cleared because your topic is okay Okay, yeah. okay very very valid. good Okay. okay And further, okay let me complete my presentation. Afterwards, there will be half an hour question answer session. In that, you put a number of questions. okay Well, okay Okay, okay 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 हाँ so we will so be these asking three, question after this discussion okay yeah. continue sir So Dileep ji these three, so you might have heard about Sendai Framework of Action from 2015 to 2030. From 2015 it is operational. And sustainable development goals, there are 17 sustainable development goals which are directly connected with disaster management and climate change. Those goals you can see on the screen, goal number 1, 2, 3, 5, 6, 11, and 13. So they are very important. And during the climate debate, you might have heard about this Paris Agreement, which took place in 2015, COP 29. So that is very important. We have, whatever the commitment was done by all the member countries of the United Nations, uh, those commitments have to be fulfilled, but we are lacking in that, and we have to actually work towards reducing the emission of greenhouse gases, so that by the turn of the century it should not exceed the surface temperature of the Earth should not exceed by 2 degrees C. But according to one UN report, recent report, it has been said that that point will reach early, and we are failing in our commitment. Most of the member countries, they are not adhering to what they had committed, though actually it was not mandatory. Commitment was voluntarily done. And because one rule cannot be ratified which can be accepted by all the countries, particularly in the matter of global warming and climate change. There is too much a digital divide in the world, and moreover there is difference of development also. Developing countries are there, developing and underdeveloped countries are also there, so their development paradigms are different, and it is very difficult for each member country to strike a balance between development and the current state of technology which is being used in their country also. These things are very important, and we have to work in tandem with all that. Now Sendai framework of action, which has been formulated. Sendai is a place in Japan which is extremely prone to earthquake, and there actually a meeting was held, and for disaster risk reduction in 2015 it was done. And Bihar is the pioneering state in the country which had taken the initiative to do this Sendai framework related national workshop there, so that all the disaster risk reduction related plans can be streamlined according to Sendai framework of action. And one big
Bihar roadmap of DRR has also been done, taking a cue from that. Right. So this is very important. So I am showing you a picture of an animal. This is the statue of this bird. Can you identify this bird? And why am I showing it to you? Anybody from the audience can respond. This is a flightless bird called dodo, which was found near Madagascar or Mauritius, last seen about, some years ago. Now it has been declared extinct. It is believed that due to the impact of global warming and climate change, this bird has got extinct. It was a flightless bird. It could not move to far off places in search of food or so. The food supply dwindled, and eventually, the limited number of this bird got eliminated from the ecosystem. So why am I talking about this? Have you heard the statement of one scientist? If the bee is eliminated from the system, within 20 years, all the population, all the biodiversity will be wiped out from the earth. So every organism is important. We all are connected with each other. It's not that we are, working in isolation, living in isolation. We are getting impacted, okay, by each another organism. Why? Because that is the chief pollinator in the ecosystem. If it will not pollinate, then what will happen? Most of the agriculture crops, they will not give us cereals, pulses, legumes, etc. No, they the production of such plants will be affected because that is basically facilitated by insects or bees. Okay, so that's why we have to be concerned about each and every animal. If it is getting eliminated from the system, that means there is some problem. There is some problem with the ecosystem. And how is it happening? We are either polluting or we are causing global warming. Okay. Pollution, I already told you, the word in Hindi is very meaningful. Jal Vayu, Parivartan. Jal and Vayu, the quality of Jal and Vayu both is getting deteriorated by our action. Okay. So we are polluting, we are emitting a lot of gas, greenhouse gas. That's why now we are going for switching over to electric car and all. So that way we have to be conscious. We have started taking action, okay, and the results are also there. Now we are switching over to CNG, less fossil fuel that is being used. Different methods and are also being used. Even at the individual level, the action is being taken. People are actually becoming more eco-friendly in lifestyle. So these things are needed now if we have to save our planet from disaster. Otherwise, I was talking about bee as the importance of bees and the impacts on bees due to pesticide pollution and all that has been well documented by UNEP, United Nations Environmental Program. Or there is a big document on it. So air pollutants interact with scent molecules sent out by plants, which bees need to locate food. This means it takes bees longer to forays and become less effective at pollination. So उसमें pollination का जो power है वो कम हो जाता है. इसलिए it is very important. Even all insects, they are involved with pollination. कुछ वर्ड्स ऑफ वाइज कुछ ये भी सुन ले. आपको तो मालूम होगा कि बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनके ये वाइस प्रेसिडेंट थे एल गोर. उनकी मूवी आप लोगों ने देखी है एल गोर की. बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट आई एम शोइंग, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने ही कंसर्न जारी किया था और आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि वी शुड विड्रॉ फ्रॉम ऑल climate related deals. Okay, so this is quite contrasting. We have to understand the problem. Being an environmentalist or being a
disaster management, disaster manager, I feel that we should think seriously about climate change issues, and we have to take action both at individual level and global level. And this requires substantial funding. Even in the last COP 229, which occurred in Baku, there also a pledge was signed from $100 billion to $300 billion. The green fund quantum has been increased, so that's a welcome move. And the next COP conference of parties that will take place in Brazil, I believe, that will be COP 30th. And that something meaningful will definitely come, because in the last COP, no big countries participated, and due to fluid situation in the US also, actually the things could not move forward in that particular conference of party meeting in Baku, Azerbaijan. In the next COP 30th, we are quite hopeful. Okay, Bill Gates. Okay, before that, Al Gore got Nobel Prize for his work on climate change. He shared the Nobel Prize with Indian scientist Dr. Pachauri, who was chief of the Energy Research Institute. He died recently, and Dr. Pachauri was involved with the generation of IPCC report, Intergovernment Panel for Climate Change. Okay, so uh, you can watch the film. It is very insightful. The inconvenient truth. The inconvenient truth is climate change is real. Climate change is a reality. We cannot ignore the fact that no, there is no climate change. Since the formation of Earth, the climate has been changing. So we should not get worried about it. The system is self-sustaining. It will take care of itself. It is not going to happen in future if we continued with this business as usual scenario, right? So we have to get our things right. We have to get down to the brass tacks. So we have to set the things right. Otherwise, the consequences will be disastrous. Bill Gates has written one book. How many of you know about that or not? How to avoid climate change. This book is very insightful, and I have read it also. He mentions about now. I mean, every year we are producing about 51 billion tons of greenhouse gases, and the challenge before the mankind is about we have to come down to zero from 51 billion tons. So, what would be the time scale like by the end of this century? Whether we have enough green technology, we will be following climate justice, we will be doing it in equitable manner. So these things are there, and I mean, okay, world over, the countries and the scientists, climate change researchers, they all are working on it, and they are trying to come up with a solution. Okay, and we also believe that the technologies also evolve in the era of AI or machine to machine learning. Something will happen which will help us in dealing with this problem as well. So we are hopeful because the world moves on hope, and they have to be hopeful all the time. And we believe that tomorrow's problems will be solved by tomorrow's technologies. And tomorrow's technologies, because technology also keeps changing, it also evolves. So hopefully in the future, but we have to keep working, then the sustainability will be there. So this is very important. So 51 billion ton, this is not a small figure, though I have it is visual on the screen, but it's a very huge figure. Even reducing 1 billion ton is a big task, and we are talking about from 51 billion tons per year to zero. So greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, different oxides of sulfur. Yes, yes, somebody is saying something. So this is the thing. Please continue. Please Yeah. continue. So we have to understand the difference between weather and climate. So to understand in the simplest manner, it is like
I relate it with the human being. Weather and climate is like weather is like mood, and climate is like character of a person. You get my point? Climate is, I mean, character of a person is somewhat stable, but mood keeps fluctuating. So weather is like that. It is the day-to-day state of atmosphere, or its short-term variations such as temperature, humidity, precipitation, cloudiness, visibility, or wind speed. Everything determines weather. Every day on the television, you see what climate report or weather report. You see weather report. Okay, so weather report you come to know about maximum temperature, minimum temperature of the day. So climate is the measurement of average weather condition, okay, which is existing over a place for a long period of time. And we take data of 10 to 30 years. So WMO, World Meteorological Organization, considers data of 30 years before determining the climate of a place. But due to paucity of data in India, we consider a time span of 10 years to define the climate of any place also. So climate change basically the shift in basic parameters of the atmosphere like temperature, precipitation, etc. Okay, of a place over a period of time, right? So climate is changing. We are facing extreme weather events. The disasters are becoming severe. More and more episodes of cyclones, then floods, urban floods, then lightning. These things are happening, right? You can see there is one study, temperature change since 1951. What has happened on planet Earth? The red zone, I know that is warming up more. Then orange zone, yellow, dark yellow, you can see. Dark yellow, and white is neutral. Okay. So this is the global scenario, and the temperature record is being kept. It is being studied also, and we know that globally there is impact of global warming, and the climate change has become a reality, right? So UN Secretary General says that from global warming we have reached the era of global boiling. It was mentioned in my slide earlier. So global boiling, so we have to deal with that situation. We have already reached the point of no return. I mean, you get my point, whatever I'm trying to say. Point of no return means now we have to take action. We are doing firefighting now. Fire is already there and we are trying to douse it by our action. So quick action is required, enhanced preparedness is required, a lot of funding will be required, everything, all the resources will be required, okay, to deal with this. Biome, okay, there are terrestrial ecosystem, marine ecosystem, freshwater ecosystem, everything is getting affected by it. Okay, community, population, individual, everything. So let us understand this greenhouse effect. Radiation was coming and then going back into the atmosphere, but now due to exhaust gases, flue gases, and all, the atmosphere has got polluted, and most of the radiation now that is being trapped, which is leading to warming of the Earth's surface. Some of the infrared radiation passes through the atmosphere, and some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. The Earth's surface is getting warmed up. There is one research that going on. What is the connectivity? Even it can cause geological disaster also, because internal temperature of the Earth will also be affected. So there may be incidences of more earthquakes and geological disasters like landslide and mines fire, etc. Okay. So, but I mean, there is no convincing report on it. But for instance, I mentioned it. Even it can impact the condition below the Earth's surface as well. This has been anticipated by the scientists, and people are working to find out the correlation, and also on the convincing reports will be there with evidence, facts, and data. Then we will be able to comment on that convincingly. But the fears are now being raised. Okay, so we have to be
careful about it. So these are the normal, impacts of a global warming. Melting of glacier might have heard. Due to that, what is happening? The unwanted flood event that will occur. Sea level is rising. 8 millimeter rise has been recorded after yeah, this industrial revolution also this year. Increased extreme weather events, flash flood is occurring. Kedarnath in Uttarakhand that was hit by severe flash flood, which caused landslide also, and a lot of people died in that. So uh, even most of the cities are getting flooded nowadays. In 2008, I tell you, even in Jharkhand, Jamshedpur was affected. That the city was flooded, and Patna also in 2019 there was flood. So in Delhi there is always a problem. There is incessant rain, then again water logging occurs because everywhere we have reduced the green cover. Moreover, we on the name of development we have created roads. We have covered the green patch. So that is actually reducing the water absorption capacity of the earth surface. So where will that water go? Of course, yeah, that will get accumulated at different places in jam patches and all. And when there is incessant rain, more water will come, and that will lead to urban flooding. And that has now become a major challenge. And National Disaster Management Authority is also trying to tackle it at the national level through a separate program. So increased extreme weather events, low agriculture productivity will decrease by 20%. Population is increasing, so there will be mismatch. Agriculture commodity prices will go up, so there will complete chaos. The economy will of the poor countries will collapse because they cannot, import deal with our import bill of food and also food scarcity will occur. So that will also with the biodiversity loss, spread of epidemics, even COVID-19, it is said that might have occurred due to climate change. The virus got mutated and it became highly pathogenic and caused loss of life and all. So spread of epidemics. So that is also a huge challenge. Eventually, it will lead to economic loss. You can also think about some other impacts, which are due to global warming, which can also be inserted here. I might have missed those points, but this is the situation. Like we have to understand how the food security will be affected worldwide. So the world is worried due to this. The organism gets eliminated from the ecosystem because of the scarcity of food. अभी जब करते हैं फास्टिंग वगैरह तो वीक महसूस करने लगते हैं तो फिर खाना खाते हैं शरबत खा वगैरह पीकर फिर फास्ट खत्म करते हैं तो फिर एनर्जी आती है देन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल कंडीशन एंड सो तो इसी तरीके से अर्थ को भी अगर हमें ये करना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा वट एवर वी हैव अक्वायर्ड तो देयर इज गांधी जी ने भी बोला था कि देयर इज टू मच resource on this earth for our need but not for our greed. So हमें greedy नहीं होना है. ये है कि whatever you know we have to meet the requirement of the present generation without compromising the need of the future generation. This is sustainability. This is very important now, sustainable development. In everything we have to think about sustainability. Sustainability of the process and sustainable agriculture, reduced use of fertilizer, pesticide. You have to use biopesticides, biofertilizers, organic farming to make the environment sustainable. Otherwise, what will happen? A lot of chemicals will start circulating in the environment. It has already created havoc, and we will be adding. If we will continue adding such harmful chemicals into the environment, it will impact the biodiversity badly, and so productivity or agriculture productivity will be reduced. So the difference is very high, even up to -25%. That agriculture productivity can be
that agriculture productivity can drop also. Yes. So biodiversity loss, see what is the extinction rate is very high now. One out of eight bird has already got it is getting eliminated almost. I mean, every year this is the situation. Like one out of four mammals, one out of four conifers, they have in fact got eliminated from the ecosystem due to harsh condition which is prevailing post industrialization. We always say post industry after 1850, we started keeping record data. So after 1900, even after the invention of thermometer, most of the discoveries or inventions were done in the last century, in the 20th century. Afterwards, we had scientific, we adopted more this scientific way of living. We started questioning everything. We started, checking everything, validity, this and that. Moreover, yeah. So now we had the power to evaluate any system. Uh, that's why, I mean, whatever recent records are there, according to that, this kind of extinction has already occurred, and biodiversity loss is taking place on everyday basis. This is the risk of extinction. 75% of genetic diversity of agriculture crop has already been lost. We have only 25. So genetic pool is that is also getting dwindled, all due to global warming and climate change. Fisheries, even the ocean acidification is taking place due to that fisheries and coral, they are getting affected due to water pollution. In acidification, when the pH will go down, then actually it will be difficult for such organisms to survive. 70% of the world known species uh, risk extinction if the global temperature rises by more than 3.5 डिग्री सी. तो आप जान लीजिए कि जो हम लोग टारगेट अभी लेकर चले, चलो भाई 2 डिग्री सी, तो ये तो 2050 में ही आ जाएगा. तो 2100 तक में बाई 4 डिग्री सी जो परमिसिबल लिमिट है, उसमें भी अबाउट 70% ऑफ द नॉन species are under the risk of extinction. So this is the scenario. 350 million people already suffer from severe water scarcity, particularly in the continent of Africa and Asia. Okay, so scenario is very bad. We are hardly having 2.5% of world water reserve. Okay, to on our access, which can be which is fit for agriculture and drinking purpose. Salt water which is present in ocean, that is of no use. We cannot use for agriculture desalination plant. If we put then water drinking for 1 liter drinking water, we will have to spend a lot and the water will be very expensive. So the fresh water reserve, we have to actually conserve our water resources. How I don't know. I mean, how many of you have heard about Indian Network for Climate Change Assessment (INCA)? It has presented 4 into 4 report, assessment report, which was basis of the UNEP report also for protection of environment and sustainability of our resources and also these are the 4 regions which are identified as biodiversity hotspots in the country: the Himalayan region, the Western Ghats, the coastal area. They have distinct biodiversity. You know, uh, Can you go back to the previous slide? previous slide. Yes, Now one this more. Ministry of Environment and Forest and Climate Change has also been inserted into it. So climate change report, this is very important. Inca, this form the basis of our this climate uh, change program in the country. So 4 regions and 4 sectors have been identified under this report on which we have to work. There are other sectors also which are getting affected, but these 4 regions, the Himalayan region, Western Ghats, the coastal area, these 4 regions have been identified, and 4 sectors in each region where we have to work with. That is agriculture. I have already explained you what is the impact of climate change on agriculture. The productivity of the agriculture crop is going to decrease by 20% at least on an average. Forest productivity, that is also decreasing. How much forest is required? Green cover is required for sustainability of life on earth.
The thumb rule is 33%. Fortunately, man, Bihar has very low percentage, and Jharkhand has got good percent, about 29% and all. But this India, it is hovering around 21%. So we are lagging from the sustainability level, 33%, which is the global standard. So we have to increase our forest cover also. Human health, we already know so many diseases are occurring. Earlier, we have not heard about diseases like what COVID, then chikungunya, so many different viruses and bacteria. They are getting mutated and causing different types of diseases. Water is getting polluted. Access to I mean, potable drinking water is also very less. I have already given you the figure. So many people are getting affected. Uh, Half an hour I will keep for discussion. I am coming to an end shortly, so don't get restless. And I request, some of the mics are still on, and so that is causing echo and a lot of trouble. Please, I request the audience to switch off the mic. Please turn it on during question answer session. So your carbon footprint in 2018, the rank was this: how much greenhouse gas is being emitted by each country. You can see. So India is also not far behind. We are at number 3 now. Earlier we were at 8. Other countries have taken some green initiatives, and they have reduced their carbon footprint. They have switched over to much greener option. Even energy sector is the biggest culprit in India. We are emitting about greenhouse gases which are coming from energy sector. That is, I mean, about 60%. So energy sector, on that we need to work. So this is the list carbon footprint. Even we have to think about our footprint also. We can also calculate our carbon footprint. I give you a task like, how much paper you consume. Better we should go paperless. Even Bill Gates advocate the also advocates the idea of paperless office, because paper comes from trees. So we have to cut more trees to produce paper. So if we go digital, so that will help in fact reducing the carbon footprint. So what is your you can calculate your carbon footprint, like how much electricity you consume, what is the electricity bill of the house, or how what is the stationary requirement of the house, what is the petrol or diesel requirement of the house. Even on these three things you can work, then you can reduce your carbon footprint substantially. So this is an exercise for you. You can do it, and moreover you can get benefited. So long term change in average weather condition on a given region, that I have already explained. Greenhouse effect, I will go a little faster. Some of the protocols are there. 1987 Montreal Protocol. Then actually we in 70s we became aware about the environmental problem. We started thinking seriously about air pollution, water pollution. There are two landmark protocols: 1987 Montreal Protocol and 1997 Kyoto Protocol. Montreal Protocol was basically for protection of the ozone layer, so that the population or different organisms can be protected from the harmful ultraviolet rays of sun. For that, everybody, I mean, all the countries were asked to take adequate measures to reduce the emission of freon. And nowadays, the freon or chlorofluorocarbon, that has been usage of that has reduced drastically globally as a refrigerant. In Kyoto Protocol, it was mentioned that we have to take appropriate action to reduce the emission of carbon dioxide from source, and we have to increase the sink for absorption of carbon dioxide. Okay, like okay, when a forest is a sink, even carbon sequestration, some technologies have also developed. Well, you can see we have reached the point of no return. This is from IPCC report. Continent wise, I am showing you what is the rise in temperature since 1900 till 1950. Everything was scenario was good, but after that the graph started going up.
afterwards, like, earlier we were playing like test match, then one day, and from 1950 onwards, it is looking like, the scorecard or the graph of this 2020 match. So it is getting accelerated, and red zone you can see the graph has already reached the temperature anomaly that is there in continents. You can see what is there. So in global land, global ocean temperature, everything has gone up in the past 50 years or so. Okay, so this is quite alarming. This is quite alarming, and we have already reached the point of no return. So what we can do is we can reduce the carbon footprint individually or also at the national level. We have to adopt green technology. We have to leave, old technologies which are generating a lot of carbon dioxide or emitting a lot of flue gases into the environment. So we have to discourage the use of that particular technology. You can see the annual greenhouse gas emission by sector. It was evaluated. It is as per IPCC report. Power sector is contributing a lot. Bill Gates has also mentioned in his book, how do we, I mean, move, like what is the मान लो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दैट हैज टू बी एड्रेस, किस तरीके से हम लोग उसमें कितना ज्यादा डीजल फॉसाइल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, उसको कट डाउन करना है. अभी तो एक और भी आ रहा है कि वैक्सीन देना है कि मीथेन गैस है जो, बिकॉज द लाइव स्टॉक मैस्टिकेट्स वो जुगाली करती है और उसके कारण है जो काफी मीथेन गैस रिलीज होता है, कि उनके मीथेन गैस उनसे एमिट ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन डेवलप हो रहा है. इट वाज अ रिसेंट न्यूज. तो उसके लिए भी पीपल आर वर्किंग. Methane is more powerful than carbon dioxide, 6 times more powerful than carbon dioxide in its global warming capacity. So that is why people are during agriculture activity also methane gas is released. So it has to be reduced considerably by different action. Even the glacier, see, Gangotri glacier, that is also shrinking. Mahakumbh is going on. Okay, Saraswati River, that has already dried up, and there is fear that in the next 50 years, even the Ganga River flow will be reduced considerably, because the glacier is sinking. See, at 1780, where was it? And now, and the last record, 2001, is showing much below than that, and so the flow of water in Ganga will reduce considerably, and this river will also become this will also get dried up. I don't know whether by the end of this century or so. So there is direct impact of global warming. Heat scale low-lying islands, they are already under threat. Maldives and all countries, they are at all islands, they all are at risk. Some of the big cities which are located in the coastal regions, due to global warming and the sea level rise, they are facing the flood of coastal flooding, and by 2100 these cities, whatever you are seeing, they might be eliminated from the global map also. So that is the threat. Like in South Asia, you can see the threat on Bangladesh, coastal region of Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Gujarat. So these areas will be submerged. So the threat is real. We have to understand the problem. We have to work hard. At individual level, at least we can do. We cannot rely completely on Kyoto Protocol, Montreal Protocol, and Conference of Parties and all. They are doing things at the international level or national level. We have to take action at the individual level also. So there is a small prescription. If we follow all these, we will be able to contribute effectively in reducing the carbon footprint of the world. Okay, thank you very much. So you can see the range I of have yes. This is where I I, stop. may I a small request?
to be a little slow while displaying the charts. Sir, Can you be a little slow while displaying the charts? Last chart you want to see, sir? 10 points which are to be yeah, implemented. yeah, yeah. Last chart you want to see. So little slowly, please show that. There are Okay, okay. several. Dilip Can ji, you last chart. also this? Yeah, this Sajid, was a reduce reuse cycle. Use less heat and air condition. Change a Yes. light bulb. Drive less and drive smart. Buy energy Now efficient LED product. bulb is being used. So now that Yeah. filament bulb, Use more less star, hot water. like you are buying a fridge. You can go up to 5-star rating. Yeah. Use Use the of off switch. plant a tree. Get an energy audit report. Okay. Report card. Encourage others to conserve. Okay. That is very good 10 points. the first chart on the left hand side. First chart. First chart here on the side, the top one. First point, sir. Reduce, reuse, recycle. 3R. Yeah, it is not visible. It's not visible, but then I say, I think it is It is. where the black and green, and then spots by Which one you are talking red. about? Sir, 10 things to do. This slide I am showing. Red. I'm saying the black and green. This one, sir. Inter- yes, the first one in the left hand side. First one left hand side. Sir. Yes, yes. Projected coastal flooding. That's right. So, which are the coasts in India uh, which are most vulnerable, and for Asia? If you can just Sir, I have wait for shown a you the major cities which are under threat due to coastal flooding, which may occur with this continued global warming and climate change. And Asia, in South Asia, I have already shown you the photograph. You can see the red zones. Okay. So eastern coast is more vulnerable than the western coast, and the region from Lahore to this Karachi to this Gujarat coast, that is also so the vulnerable. red one Red most one is under vulnerable. threat, sir. Yeah, due to sea level rise, these areas will be affected by coastal flooding if we continued this global warming thing. If the business as usual scenario prevailed, So the coastal areas of South India doesn't seem to be affected much. no, no, sir. I mean, this is if you get the micro picture, then actually both the I mean Kerala, then Tamil Nadu, Andhra, these coastal areas are extremely vulnerable, but eastern coast is more vulnerable. Well, enlarge this, you will come to know that the eastern coast is more vulnerable. Here you can see up to Thailand, Japan, sorry, yeah, yeah, this Burma, Vietnam. These countries will be affected. Indonesia is also under threat, and Maldives, Lakshadweep, they are under threat due to melting of glacier. I mean, the sea level is rising, and these I mean islands will be submerged first. I mean, low-lying islands. Then the coastal areas will be affected badly. The red color shows greater vulnerability, Yes, sir. Sir, red color shows shows greater. vulnerability of coastal flooding due to global warming. Yes, but the peninsula region is nearly
nearly without any red patch. I mean, sir, this is what I'm saying. We go for micro picture, then entire coastal region, around 7,500 long coastal region we are having, both east and coast, west coast together. But eastern coast of 5,400 kilometers, that is more vulnerable. Okay. So fine. The floor is open for question and answer. Anybody can ask any Dilip ji, question. I mean, Dilip ji, would you please, I mean, zoom the Singapore region? Zooming facility, let me see if I could. नहीं, ऐसा ही कोशिश कीजिए, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा है सर? अच्छा, हाँ, ये माइक्रो पिक्चर में थोड़ा है। हाँ, तो सिंगापुर भी डूबेगा। सिंगापुर का तो एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट करूँ तो that is also under threat, but we'll have to actually on the superimpose it on the political map of the world. अच्छा, ये And GT I will क्या be है? able to say convincingly because in GIS mapping, What is GT? different layers थोड़ा are सा है। required. So this I have taken from one report, sir. But all coastal areas are vulnerable, extremely vulnerable, from moderate to high yes. degrees. हाँ, क्योंकि वहां मैं कोस्टल एरिया देखा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या ओपिनियन है सर? लग रहा है वो नहीं, वो भी मरलाइन वाला डूबेगा, जो स्ट्रक्चर वो है भी डूबेगा सर। वो भी डूबेगा सर, अंडर थ्रेट। थाईलैंड का हाँ, है, नहीं, एक्चुअली है क्या ना, जो जापान के बहुत सिंगापुर सारे में जो मेरा आइलैंड्स अंडर घर थ्रेट है। हाँ, उसमें वो मतलब वो सिंगापुर सिटी के बीच में है, तो वो तो सेफ है। लेकिन हाँ, वो कोस्टल तो एरिया मरमर में वाला। जब हम भाड़े में रहते थे, तो वो हाँ हम देखेगी तो एकदम इंडोनेशिया का किनारा दिखता है, तो आपके हाँ, मैप में इंडोनेशिया तो पूरा डूबा हुआ है। तो इंडोनेशिया इसीलिए में सर, हमें क्या लगता है, इंडोनेशिया सर? हाँ, क्योंकि इस पहले क्या हाँ, सिस्टम अंडमान था, निकोबार भी दे, अंडमान इंडोनेशिया से निकोबार लोग में था। सीधा सिंगापुर आते थे, स्ट्रेट सीधा। तो फिर सिंगापुर में मिट्टी भर भर के अपना वो लोग कुछ एरिया बढ़ाया, ब्लॉक किया, फाटक लगाया, ब्ला ब्ला ब्ला, वहाँ जस्ट हॉलैंड कैजुअली की पूछा तरह किया जाना। हुआ है ना। हाँ हाँ सर, तो वही टेक्नोलॉजी, मैंने कहा फ्यूचर प्रॉब्लम्स विल सॉल्व बाय फ्यूचर टेक्नोलॉजी। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वी माइट कम अप विद सम सॉल्यूशंस, स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो वो हो सकता है कि बाद में उससे हम लोग और बचा पाए पृथ्वी को। गार्जियंस ऑफ द दिलीप, प्लेनेट ट्रम्प अब जो साहब मैं बैठे कुछ हुए हैं। कहने जा रहा हूँ इसका, दिलीप जी विथ योर परमिशन, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, बोलिए इसका सर। कोई भी ऑथेंटिक साइंटिफिक भी प्रूफ नहीं है, लेकिन इस बात को सुन लिया जाए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और पॉजिटिव है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा मानसरोवर रिवर है, सॉरी मानसरोवर झील है ना सर, हाँ, वो तो चाइना में है सर, तो हाँ, तो कैलाश पर्वत। ये जो गंगा नदी का ओरिजिन कैलाश से ही होता है, वो अंदर ही अंदर पानी आता है गोमुख में, लेकिन इसका कभी भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, वेदों में उपनिषद में इसका जिक्र है। तो मैं कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इसका अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि गंगा नदी कैलाश पर्वत से ही निकलती है, लेकिन स्पिरिचुअली और इसके बहुत सारे संत लोगों के शोध हैं, संत लोग का कहना है कि नहीं, वो गंगा नदी कैलाश से ही निकलती है, अंदर ही अंदर से वो आता है, गोमुख में आके वो पानी निकलता है। ये मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर सर। वो तो ठीक है भाई, सब कुछ कनेक्टेड है, जो भी जो माइथोलॉजिकल है, ये तो बहुत सारा प्रूफ भी मिलता जा रहा है। और सर एक ये भी है कि जैसे बताया कि अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण मैं बता रहा हूँ फ्लडिंग हो रहा है, जो कोस्टल फ्लडिंग है, बाद में पूरा जैसे जलमग्न करने का मनुस्मृति में दिया हुआ है। तो डिजास्टर तो हो गया था पूरा, एकदम पूरी पृथ्वी है जो जलमग्न हो गई थी,
पूरा बर्फ पिघल गया था नॉर्थ पोल साउथ पोल का, तभी ना ऐसा हुआ होगा। इवन क्रिश्चियनिटी में भी है वो जो क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ नो, जो उससे जो जैसे हमारे यहाँ ये लेकर चले हाँ, वो तो उसका देख, हमारा कॉन्सेप्ट। मैसेज यही है, यदि ये मानव जाति ईमानदारी से प्लानिंग करे तो अपना, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हम लोग आराम से अपने कोस्टल सिटी को बचा सकते हैं। अभी से उसकी तैयारी शुरू बिल्कुल करते हैं तो बच जाएगा सर, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बना दें कोस्टल एरिया में कायदे से, तो और ये हो सकता है, ये मेरा पर्सनल विचार है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। जो हम लोग हॉलैंड से वो सीख सकते हैं ना, एक्वायर्ड लैंड है वो सब। बिल्कुल 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 ठीक है। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन या कोई विचार अपने रखना चाहते हो? क्योंकि ये जनरल टॉपिक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज और जो भी है, लेकिन वॉट एवर लिटिल आई नो आई ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल। होपफुली आई हैव बीन एबल टू गिव सम थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज टू द ऑडियंस। अब दिलीप जी, एक जस्ट एक आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक साल ऐसा हुआ, उस समय अर्जुन मुंडा जी का, हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, एक ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि एनएन सिन्हा अभी सेक्रेटरी आई मीन स्टील थे, रिटायर कर गए, ये हाँ जी सोर्स सर। ऑफ इंफॉर्मेशन वही है, तो हमारे जूनियर हैं स्कूल के, ही टोल्ड मी, नागेश जी, यदि भगवान ने बारिश नहीं की होती तो झारखंड सरकार के पास वाटर क्राइसिस के लिए कोई उपाय नहीं था। हाँ सर। ये हाँ मैं झारखंड अपने रांची शहर की बात कर रहा हाँ। हूँ, सारे डैम वैम पानी कम हो गए थे, सारा चीज मतलब वाटर लेवल नीचे चला गया था, तो ये सब चीजें जो प्रॉब्लम हुई वाटर थी, लेवल अभी चला तो गया है, अभी 80 भी फीट उसका नीचे चला गया सॉल्यूशन है है, रांची शहर का। हम्म। अभी तक उस पर हाँ। ध्यान नहीं दे पा रही है। सॉल्यूशन यही है कि बड़े बड़े डैम को नदियों से लिंक करने का सारा प्लान बना हुआ है, लेकिन अब हम सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलना उचित नहीं है, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, काम चल रहा है चल रहा है, जब होगा देखा जाएगा, लाइक दैट। ये जो टाल मटोल वाली चीज हमारी जो है सरकार की मतलब जो सिविल सर्वेंट बैठे हैं, दैट इज डेंजरस फॉर आवर नेशन। यही हमें विचार देना था। थैंक यू। बात सही है सर, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग और सिस्टम में आ नहीं पा रहे हैं। कुछ और ही फैक्टर है जो पॉलिटिकल ये क्लाउड को डिटरमिन करता है, तो थैंक यू इसके कारण दिलीप कुमार सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और आप तो यूएनडीपी में रहे थैंक यू सर, हैं, थैंक यू। एनआईडीएम में रहे हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल कितनी वर्कशॉप आपने अटेंड की, और जिस तरीके से आज आप अपना पीपीटी बना के लाए, ये सभी के लिए एक अनुकरणीय है। इतने अच्छे पीपीटी तभी बन सकते हैं जब आदमी को ज्ञान हो, और वो इसको हार्ड वर्क करके उसको अपने ज्ञान को कंसाइज करके प्रेजेंट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ा बहुत थैंक गर्व यू वेरी महसूस मच होता है सर कि जोशी आप सर। जैसे हमारे आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हमारे संगठन या ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा सर कि आप डिजास्टर के भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो अमिताभ जी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक वार्ता डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि एक आम आदमी को समझना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, कि डॉक्टर दिलीप कुमार के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि इन 1984 भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक करी, यस हुआ था और वो इंडस्ट्रियल वाटर डिजास्टर। सॉल्युबल गैस थी, और थोड़ा थोड़ा सा भी अगर प्रिकॉशंस लेते लोग तो काफी लाइफ बचाई जा सकती थी, अगर रुमाल वगैरह या कुछ इस तरह का पानी में गीला सोख करके। करके रखते। लेकिन उसकी ना जानकारी देने के कारण हजारों मौतें उसी रात में हो गई, और आज भी लोग मर रहे हैं, बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ये केस है सन 84 का। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक वार्ता बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर मैं एब्सोल्युटली राइट सर। अमिताभ जी से कहूंगा कि दिलीप कुमार जी जैसे एक मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय भी स्तर लिया के डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक सर। स्पीकर इस एक बार डिजास्टर पे वार्ता दें। और सर मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि आम थैंक आदमी यू को वेरी भी मच सर, डिजास्टर आई और विल बी इकोलॉजिकल ऑनर्ड। चेंजेस में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि अब आप एनर्जी सेव करना है तो उससे तो हमारा ही फायदा है। तो क्यों ना हम एनर्जी बिल्कुल सेव करें ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के द्वारा, और दूसरे प्लांटिंग ट्रीज। अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाया, उसकी देखभाल अपने परिवार के मेंबर की तरह करे, तो हम बहुत कुछ इकोलॉजिकल चेंज को रोक सकते हैं। दूसरे ये है बिल्कुल कि जैसा बिल्कुल। कि आपने बताया कि सर कि
हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तरह तरह के, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हो, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस कम से कम रिलीज हो। ये तो हमारे बिल्कुल हाथ में ही है ना करना। तो बिल्कुल, इस चीजों को हम देखें। और हमारे पास चॉइस भी है। अच्छा, और दूसरे जैसे कि बिल गेट्स ने जो कहा है वो हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर अभी हम नहीं चेते तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बारे में कहा भी गया है, तो अभी समय है कि हम इसको बचा सकते हैं और सभी लोगों को इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। हम ऐसे इको फ्रेंडली डिवाइसेस इस्तेमाल करें और पेपरलेस ऑफिस बनाएं ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पे देखें तो हमने जंगल नष्ट किए हैं और है ये। वातावरण में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फ्यूल जला के हमने किया है। और तीसरा बड़ा रद्दी काम हमने किया है कि हमने वाटर का लेवल कम कर दिया। हर जगह वाटर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जो आ ही नहीं सकता, वापस नहीं आ सकता कितनी भी रेन हो जाए। तो पानी को जितना भी हो बचाएं, फॉरेस्ट लगाएं और जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका एमिशन करें। और ये एक कॉमन इंसान कर सकता है कि इसके लिए विशेष जागरूकता के प्रयास करने होंगे। और अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों को आप मौका दें, सर से कांटेक्ट करें। और दिलीप कुमार जी, हमें बहुत गर्व है कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया और इतने अच्छे फैक्ट्स हम सभी लोगों के संज्ञान में लाए, जिसके लिए कि मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर। जी, हमारा व्यक्तिगत सुझाव है, मतलब अभी सर, उमेश जी का अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छी बात है। अभी जो बिल्कुल सर। बहुत सारी चीजें सरफेस पे नहीं आती हैं, अभी भारत सरकार को पूरे भारत में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने हैं। जो 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने हैं उसमें बहुत सारे चीजें हैं, वो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। ये हाँ जी। एजेंडा में है, नंबर 1। नंबर 2, आप दिलीप जी एक स्लाइड खोजिएगा जो इरेटिक वेदर जोन भी डिफाइंड है वर्ल्ड का। वो स्लाइड मैं भी खोज रहा हूँ, आपको होगा तो भेज दूंगा थ्रू बिल्कुल अमिताभ जी। बिल्कुल सर, तीसरी बात, आप शेयर कर जितने दीजिए। भी बंजर जमीन है अपने देश में, वेस्टलैंड। जापान ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। जितने भी बंजर जमीन है वहां जंगल लगाए जा सकते हैं। इवन थार का रेगिस्तान पूरा उसको हम घना जंगल बना सकते हैं। ये सारी चीज इसी पृथ्वी पर अवेलेबल है। सरकार को इधर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी हम किसी आदमी को मतलब क्या बोले, डंडा दिखा के इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस नहीं कर सकते हैं। अभी बस वही पापी पेट का सवाल है। हर आदमी नहीं अपना सर, 2 कमाने क्वेश्चन में, आप स्वार्थ नोट में भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट पैसे को दे कमाने में सकते लगा हैं। हुआ है। तो ये सब कुछ बातें आप तो हैं, ऑलरेडी मैं मेकॉन शेयर में किया। काम कर थैंक चुके यू। हैं। वेरी गुड सजेशन अच्छा, सर, वेरी गुड सजेशन। दिलीप दिलीप जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। हम लोग वेस्टर्न रिजॉर्ट में एक उसमें गए थे, हम लोग कॉन्फ्रेंस में। डिजास्टर, हम हाँ लोग एक हाँ सर। वहाँ पर गए थे हम लोग दोनों ने। एनडीएमए और यूएन एफपीए के इसमें कॉन्फ्रेंस में। उसमें हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। दैट वाज वेरी नाइस। और अभी जो आपने प्रेजेंटेशन दिया वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। हमारा ग्रुप तो अब इंटरनेशनल ही हो गया। और जैसा कि जोशी जी ने सजेशन दिया है कि एक और आपका डिजास्टर, एक डिजास्टर पर आप बोल चुके हैं, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी रखेंगे और एक अर्थक्वेक पर भी रखेंगे, 2-3। और हमेशा, अब तो आप हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हमेशा आपका बहुमूल्य और इतना इम्पोर्टेंट, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को और सीखने को मिलेगा। तो ये एक चीज और बताइए, ये जो डोडो चिड़िया को आपने दिखाया था धन्यवाद वो। सर, मैं हाँ, अभिभूत हो गया आप लोगों के काइंड वर्ड से। हाँ, आ रहा है या नहीं? सर हाँ, ये जो डोडो चिड़िया बिल्कुल बिल्कुल। दिखाया था, हाँ, वो डोडो हाँ हाँ। चिड़िया अभी वहां पर दिखाई देती है कि वो नहीं क्लाइमेट सर, चेंज से मूर्ति बन गया। जैसे आदमी मर है? जाता है तो मूर्ति लगा दी जाती है ना, तो वही हो अच्छा, वो जाएगा मूर्ति फिर। में। वो मूर्ति अच्छा, मैंने अच्छा, देखा था, एक म्यूजियम में रखा हुआ था डोडो चिड़िया का। अच्छा, डोडो चिड़िया का। That और got आपने बताया extinct कि about घी के। 20 years back. Now, that is not existing. It अच्छा, has got ओके, नॉट eliminated from the एग्जिस्टिंग ecosystem. एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। Yes, हाँ, that अच्छा, dodo word, that अच्छा, was a flightless word.
अच्छा, और दूसरा आपने बताया कि जब यहाँ से भी खत्म हो जाएगी तो मतलब एक सिंबल होगा कि अर्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा। आप हाँ, सोचिए कि तो चावल है जो अगर खत्म हो जाए या गेहूं का वो खत्म हो जाए, क्या होगा फूड सिक्योरिटी का? हाँ, वही है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है और फूड सिक्योरिटी कम होती जा रही है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर घटता जा रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग तो हम एक चीज साइमल्टेनियसली। जाना, तो हाँ, नहीं नहीं, हम यहाँ पर एक दिलीप हम जी लोग ऐसा है कुछ हम जानकारी मैं भी शेयर कर लूं आपसे। हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल और कंटिन्यूअस नहीं है, ड्यू टू बहुत सारे खराब निगेटिव बात नहीं बोलूंगा, हाँ, ड्यू टू मार्शल वाली ऑब्वियस थ्योरी। रीजन हमारा पॉपुलेशन स्टेबल होगा और फिर घटेगा सर। समझे दिलीप जी? ये भी प्रकृति का होगा ये, नियम है। बहुत तरह एनीवे, की तो मैं इस पर पॉसिबिलिटीज है, बहुत गहराई सिनेरियो से जैसे नहीं क्लाइमेट में बोलूंगा। भी हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो सर मतलब दिलीप जी, हम लोग एक और किसी को कुछ लास्ट में, पूछना हो सवाल तो? हाँ, हम एक लास्ट में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग के सर वार्निंग को हम लोगों ने तो समझ लिया, तो व्हाट इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन और उसका क्या यूज हुआ है? खाली ये 4-5 पॉइंट बता दीजिए कि अभी तक दुनिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप लिए गए और उसका क्या यूज हुआ और भविष्य में इसका क्या लाभ होगा। अच्छा, तो स्टेप्स तो देखिए, मैंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सबसे शुरू हुआ है। हमारे कंट्री में भी एयर पोल्यूशन एक्ट आ गया, वाटर पोल्यूशन का वो एक्ट आ गया, और हाँ, फिर हाँ, हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी 2005 आया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। तो अभी जो अमेंडमेंट लास्ट ईयर हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और ग्लोबली तो वर्क हो ही रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने भी एक अलग से संस्था बना रखी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसके तहत है जो डिजास्टर क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। इट पब्लिशेस आईपीसीसी रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंट पैनल और क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी 6th रिपोर्ट AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 पब्लिश हो चुकी है। अब 7 ये आएगी। तो ये पहले ये सारे सिचुएशन रिपोर्ट ये आती है सारे सर। ये सारे तो पेपर वर्क हुए हैं, और सर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ और इम्प्लीमेंटेशन से फायदा क्या हुआ, एक्चुअल क्लाइमेट एक्चुअल चेंज। इम्प्लीमेंटेशन में सर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है एंड एनवायरनमेंट, उसमें उसको चेंज करके अब क्लाइमेट चेंज भी कर दिया है, वो भी जोड़ दिया गया है। और उसमें हाँ, हाँ, कैंपा ये सब प्रोग्राम आ गए। पेड़, और पहले भी एफोरेस्टेशन कार्यक्रम चल रहा था। और इको हाँ, हाँ, फ्रेंडली ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इनिशिएटिव, सोलर पैनल जो मोदी जी इतना लगवा रहे हैं, सोलर एनर्जी वगैरह भी। तो हम लोग हाँ, स्विच हाँ, ओवर कर रहे हैं कि हम लोग फोसाइल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो, बैटरी वाली अच्छा, जो ईवी वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब चेंजेस तो हो ही रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि अच्छा, अच्छा, हाँ। तो कंजम्पशन ऑफ फॉसाइल फ्यूल दैट इज गेटिंग दिलीप रिड्यूस्ड, जी, वी आर आपका कुछ स्विचिंग ओवर टू परमिशन चाहिए ग्रीन। तो मैं कुछ बोलूं सर? अरे सर, ऑलवेज ऑलवेज यू कैन इंटरप्ट एंड हाँ स्टार्ट। दिलीप जी, ऐसा है, एक एक थर्ड डायमेंशन नहीं कहेंगे, एक अलग डायमेंशन से मैं बोल रहा हूँ। अभी जो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगा है और अमेरिका में जो त्रासदी है, आई एम सॉरी टू यूज अगेन निगेटिव वर्ड, तो ये जाएगा। तो अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रहा है, मतलब उसका फल अमेरिका भोग रहा है। ये बहुत, मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल बोल रहा हूँ। तो प्रकृति को, मानव को आप खराब कीजिएगा तो आपको सजा प्रकृति देगी, तो वो तो हम लोग अमेरिका कहते हैं भोग तभी रहा है। डिजास्टर तो होता अभी है। ट्रंप का क्या सोच है? ट्रंप कह रहा है कि मेरे पास 50 साल का फॉसिल फ्यूल है, और अब सऊदी अरेबिया को बोल दिया हम तुमसे पेट्रोलियम नहीं लेंगे। आई मीन, ट्रंप जो है अपने अमेरिका को उठाने के लिए एक स्टेप ये भी लेने जा रहा है। वो कहा कि मेरे पास 50, हमको 50 साल से आगे नहीं सोचना है। और उसी मैं कह रहा स्लोगन पे हूँ वो आया है, मेक 50 अमेरिका साल ग्रेट नहीं, अगेन, तो करना है उसको। 50 साल के पहले ही आपका जो अभी जो है, आपका देखिएगा जो सिस्टम इतना डेवलप कर रहा है अपने पूरे ग्लोब पर, जो पब्लिक कन्वेंस हम लोग लगभग फ्री हो जाएगा आपका। तो बहुत सारे चीजें अपने आप चेंज होते जा रही हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू। थैंक अच्छा, यू वेरी मच now सर, वेरी now I वेरी। will now I will request our students also to ask some question.
ये हमारे सभी अनुभवी और बहुत जानकार लोगों का हाँ, कमेंट उन लोग और उन लोग का असल क्वेश्चन था। में मेस टाइम हो जाता है, उन लोग को जाने भी दिया जा सकता है, मेस टाइम हो जाता है ना अच्छा, मिक्स टाइम हो जाता है। तो अब हम डिनर आपको का। ये कोई मतलब क्वेश्चन है अपने तो पूछ दिल के, सकते हैं वो लोग। हाँ हाँ, तो अब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड आई एम सीइंग दैट वन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल पर्सन, हम लोग जो वेस्टर्न रिजॉर्ट में गए थे वहाँ एक वियतनाम का आदमी था और एक अमेरिका की लेडी थी, उन्होंने दिया था। उस लेवल का प्रेजेंटेशन आपने दिया है। एंड अरे सर, इतना नहीं हमारा था आज मेरा का, लेवल सर, है हाँ तो नहीं सिंपल नहीं, प्रेजेंटेशन। वैसा ही आपने दिया है। और हम आपका प्रेजेंटेशन और हम लोग आपका प्रोग्राम और भी सुनना चाहेंगे। एक अर्थक्वेक पे और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट पे, और ऐसे ही हम लोग अपना करते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा ग्रुप इंटरनेशनल लेवल का थैंक यू भी वेरी हो मच गया है। सर फॉर योर हाँ, काइंड वर्ड्स। और हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हम लोग जब जब रिक्वेस्ट यस करें सर। तो प्लीज प्लीज हम लोग का करें, क्योंकि बहुत उम्दा और बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया, जैसा यहाँ के सभी लोग देते आते हैं, और उससे 1% भी आपका कम नहीं था। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुन लिया जाए, क्योंकि बच्चों के खाने का समय हो गया बिल्कुल, है। हाँ हाँ, उन और लोग को हाँ, तो हॉस्टल में दिक्कत हो जाएगी। हॉस्टल में दिक्कत हो जाएगी। खान हाँ साहब, हाँ अब आप समरी दे दीजिए। और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए आप बुजुर्ग हैं, अखौरी साहब बुजुर्ग हैं, ये लोग दिलीप जी को बहुत आशीर्वाद दें कि मैं चंद्रशेखर हमारे खान सर भारत का भूल गए नाम। होंगे। मैं एटीआई हाँ, रांची में था तो इनको बुलाता था, रिसोर्स पर्सन नागेश झा सर अच्छा को भी अच्छा बुलाता था। हाँ अच्छा अच्छा। तो तो अमृत बानी चंद्रेश्वर खान साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम थोड़ा सा विलंब से मैंने ज्वाइन किया, लेकिन आपका बहुत साधुवाद, जो कुछ जोशी साहब और अमिताभ जी ने कहा और पार्टिसिपेंट्स ने कहा, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण। एक मेरा आग्रह है, उसको बच्चे भी सुनेंगे, उनको भी फायदा होगा। हालांकि अभी बहुत बच्चे निकल गए हैं। आपका स्लाइड इतना बढ़िया है, आपने जो बनाया है, क्लाइमेट चेंज के जगह में ब्रैकेट में जलवायु परिवर्तन लिखना शुरू किया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जल और वायु बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है, उसकी जलवायु, क्वालिटी को जो। आबो हवा, उसको जान करके उड़ाया गया है कि जनमानस में जैसे जल और वायु और आबो हवा जो बोला जाता था, तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, वो बहुत सारी चीजों में आपके देखिएगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे गढ़े गए हैं कि जनमानस उसको नहीं समझे, और जनमानस की भागीदारी के बिना समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपके बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण, और आपने जो सार तत्व दिया है संसार का, वो 10 पॉइंट जो आपने दिया है, उसको हम इनेबलर बनाए कि हम सभी ये मिनिमम 10 पॉइंट एजेंडा जलवायु परिवर्तन के लिए, आबो हवा को बचाने के लिए, बचाने के लिए। बचाने के लिए, और आबो हवा जलवायु ही जीवन है, तो लोग जोड़ लेते हैं लाइफ साइकिल से। ये अभी आपको लगेगा, या बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बातें क्यों कही जा रही हैं, लेकिन इन चीजों से जान करके मैंने अब ये कहना शुरू किया कि इसका हिंदी बोलिए, और हिंदी जब बोलते हैं तो समाधान हो जाता है। जैसे समय नहीं लूंगा, लेकिन आप भारी विद्वान हैं और आप में क्षमता है, बहुत लोगों में क्षमता नहीं होती है, आप इसको ला सकते हैं। बहुत लोगों को अपनी ही नहीं जानकारी है, तो वो कैसे लाएंगे, क्योंकि सारा जो है वो डाउनलोड करते हैं, वो अंग्रेजी में है, हिंदी में है तो गलत है।
काफी, और आप विद्वान हैं, तो आपकी विद्वता को नमन करते हुए इस चमन की तरफ से आपको फूल जो बचाएगा इस धरा को, वो फूल मैं आपको देता हूँ, अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। उसका एक अंश आपने कहा, there is enough in the world for everyone's need, but not for the greedy. Everyone's greed. But everybody has become greedy. So let us have full in our life. P-H-U-L. Sir. Purity. Purity. Purity is a must now. If we will not be pure for sure, many problems will come. So P, honesty. We have to, anyone who is talking in a dishonest manner, like Amitabh Ji is an example of that, honesty and unselfishness, then there is enough in the world for everyone's need, but not for the greed. So unselfishness, U is unselfishness, and L is love. I will add it कि यदि बच्चे यहाँ हैं तो LOVE, इसको हिंदी में बोलिए तो LOVE, हिंदी में क्या बोले? प्यार बोलेंगे, प्यार। नहीं, अर्थ नहीं, लोभ, लोभ, LOVE, लव, लव, लव लोभ, अंग्रेजी में, हिंदी में लोभ, 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 greed. बोलते हैं, लव है लोभ। यदि इस चीज को हम समझ जाएंगे कि हम में प्रेम नहीं रहा, हम में लोभ आ गया, तो बिल्कुल। बाजार उसको लूट लेगा। और सारे उपक्रम हमने 90 में मॉडर्न फाउंडेशन फॉर मार्केट इकोनॉमी स्विट्जरलैंड में, जहां 1200 एम्बेसडर थे, हम बोले कि ये समय आ रहा है कि मॉडर्न फाउंडेशन नहीं रहेगा तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो लूट लेगा। अब आप ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं अपना समय ले रहा हूं क्योंकि आप भारी विद्वान हैं, इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। जस्ट आफ्टर 20-25 ईयर्स, 25-30 साल के बाद में, अभी जो 70-80 साल के लोग हैं वो जब चले जाएंगे तो अभी वाले जनरेशन को पता भी नहीं रहेगा कि ऐसा होता था। वो भावनाएं भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो पूर्व से हम कैसे थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, इससे आपका जुड़ा हुआ, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आपदा प्रबंधन हो या जलवायु परिवर्तन हो, आप जो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इन चीजों को बढ़ाया धन्यवाद जाए। सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक प्रोग्राम, दो तीन प्रोग्राम और आपका ओके सर। करवाएंगे सर और सर आप तो हमको नेटवर्क पे सहमति आ गया दीजिएगा। आपके। हाँ, और चंदेश्वर खान साहब बोल रहे हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में भी बोलेंगे। और सबको धन्यवाद और सबको प्रणाम। और सबको अगली साधुवाद, बार, सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए मेरे तरफ से हाँ, भी। थैंक मैं यू, बहुत थैंक यू वेरी खुश मच हुआ है। डॉक्टर दिलीप और सभी को बाय, बहुत गुड धन्यवाद। नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।